हेलो, हेलो, हेलो।
Hello. Hello. Good evening. Good evening, sir. Good evening. So, Good evening, sir. good Good evening. evening, sir. Good evening. So, some new tones are audible today. Pavan is there. Pavan. Okay. Right. Pavan, you are available. Okay. Then, Savana. Good evening, sir. No, Pavan, yes, you are good. You are there. Savana. She is not there. Okay. So, who are there now today? Ansu or Ans? Present, sir. Present. Okay. Asma. Yes, sir. Okay. Okay. So, right. So, Pavan, up to what? Which number we have done yesterday? क्या सर एक और बार बोल दीजिए. नहीं नहीं, कहाँ तक हम गए थे कल? एक सेकंड सर बताता हूँ. Okay. 53 क्वेश्चन नंबर तक हो गया था. Okay. 53 भी हो गया था. Okay. So, we will go to now 54. Okay. पढ़ो. सर 54 क्वेश्चन नंबर Yeah. पढ़ रहा हूँ. There is a uniform electric field of intensity E which is as shown. How many labeled points have the same electric potential as the fully shaded point? हाँ. इसमें कोई मीनिंग आ रहा है? और एक बार पढ़ो. पढ़ता हूँ सर. There is a uniform electric field of intensity E which is as shown. How Yeah. many labeled points have the same electric potential as the this fully शेडेड पॉइंट. shaded point? हाँ, वो शेडेड पॉइंट क्या इसमें क्वेश्चन में क्लियर नहीं आ रहा है ना? No, sir. Okay, I'll just tell you. What he's telling is, the uniform electric field, there are he's telling this point is shaded point. This is shaded. ये shaded point का जो electrical potential है, how many these points? These are the points. How many points have the same potential? इसका जो potential है और कितना point है इसमें जिसका उतना ही potential है? Sir, 3. Free.
ये देखो पोटेंशियल मतलब E into D. So maybe the charge is somewhere at infinity because of the charge there is uniform electric field here, uniform electric field. So at the same line, the electric potential will be same on any point along this line. Okay, suppose there is something like the charge is here, there are lines of force in different directions, lines of force different directions. Then same potential line would be this circular surfaces. These are all similar, same potential. So here on these circles, same potential. Here circles, same potential. When the electric field, when the lines are parallel, then any line drawn will have the points the same potential, because E into D from here, suppose if the E starts from here, highest E, it is going that side. So the E into D, so the same point, this any line perpendicular to these lines will have the same potential. You can have these four have the same potential. These four have same, suppose V1, these four have V2, these have V3. So these have all the 4 points have same potential, here same potential, here same potential. So he's asking, here this is shaded area, so how many more have the same potential? So another 3. So 3 have the same potential. तो समझ में आया ना? Is it clear? Yes, sir. देखो the suppose the charge is at one point and the lines of field lines are radially, field lines are moving radially from the middle this point, then the circle will be the circle with the same radius will have the same potential. All these points have the same electric potential. Okay. So here V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R. Okay. So R, same R में जितना आप सर्कल लेंगे वो सर्कल का ऊपर पोटेंशियल सेम. Okay. Here the lines are parallel. So you take any line perpendicular, they will have any point on this line will have the same potential. Any line point on this will be same potential. Here, any point on these lines, same potential. That is the concept basically. This is a small problem on some concepts. Oh, yeah. हो गया? If it is Yes, over, sir. then come to question number 55. Yeah. Yes, sir. हाँ. Statement. Inside a charged or neutral conductor, electrostatic field is नहीं, zero. उसका पहले जो है ना 55 का. सर 55 मतलब क्वेश्चन यही तो पढ़ना था ना. हाँ, वही कौन सा है जो आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट. यस सर. ऑप्शंस भी पढ़ूं? हाँ नहीं, हाँ ये एक एक देख लेते हैं कौन सा व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है. पहला नंबर, पहला नंबर बोलो. Inside a charged
inside a charged or neutral conductor, electrostatic field is zero. Inside a charged or neutral conductor, electrostatic field is zero. ये right or wrong? Sir, correct है. This is right or wrong? Sir, correct होना चाहिए ना. वो Inside a charged or a neutral conductor, electrostatic field is zero. कंडक्टर का अंदर फील्ड क्या होता है? क्लियर नहीं हो रहा है? हेलो. yes sir. Inside a charged or a neutral conductor, electrostatic field is zero. ये right or wrong? आइडिया नहीं है? नो आइडिया? No sir. अरे ऐसा है, ये तो पूरा जीरो भी होगा ना, जीरो तो होता है. हाँ तो राइट. ये कंडक्टर है. एनी कंडक्टर द चार्ज, ऑल चार्ज whether positive or negative, a charge remains on the surface or field inside is zero. Any conductor field inside is zero. वही ग्राफ करके पहले बताया था ना. field, your conductor, the field will be electric field inside a conductor. This is suppose this radius, this is R, this is R. So it is everywhere inside is zero. So the electric field is like this. From zero to R, the electric field is zero, and then from R onwards, at R is equal to R, electric field is 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R square. This is electric field. E is equal to 0, R is less than R, and this is the field when R is greater than R. So the electric field is like this. So inside the conductor, the electric field is always zero. So conductor ka inside the conductor, the electric field is zero. Then number B. The electrostatic field at the surface of the charged conductor must be tangential to the surface at any point. The electrostatic field at the surface of a charged conductor must be tangential to the surface at any point. You right or wrong? right, yes, sir. How is the electric field? Electric field at the surface is tangential or radial? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, electric field at the surface, electric field are all in this direction. So at the surface, electric field is radial, not tangential. Electric field ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. Electric field is yes, sir. radial. So ये yes, right or wrong? ये right or wrong? wrong. Wrong. तो wrong निकालना था, मिल गया wrong. चलो फिर भी देखते हैं और जो क्या क्या ऑप्शन है. नंबर सर सी. कौन सा क्वेश्चन है, एक बार प्लीज शेयर कर दोगे? 55 क्वेश्चन नंबर 55. ओके सर. सी पढ़ो. ये पवन का ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है. ठीक है, 55 सी.
सर से पढ़ता हूँ. हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो. There is no net charge There is no net at charge any point inside. inside the conductor. वो जो पहला बताने के टाइम में बोल दिया कि there is no net charge at any point inside the conductor. कंडक्टर का अंदर कोई चार्ज नहीं रहता, वो सरफेस को आ जाता है. कंडक्टर का अंदर जो भी चार्ज रखोगे वो it will all come to the surface because it is a conductor. The charge will come to the surface. Okay. Yes, sir. Charge will come to the surface. So inside there will be no charge. The charge will be only available inside a dielectric. Dielectrical material, suppose some a sphere will be there with the dielectric material, then charge can distribute inside that dielectric material. But the conductor का जो एक sphere of conductor you will take and put some charge at the center, all the charge will come to the surface of the conductor. So there is no net charge at any point inside the conductor. Okay. That is so. This C is correct. Then D. Sir, next point पढ़ो. Electrostatic potential is constant throughout the volume of the. Right or wrong? Sir, right है. हाँ वो काल किए थे ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. दैट इज 1/4 pi epsilon 0 q by r. दैट इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर का रेडियस जितना है उतना थ्रू आउट, सेंटर में भी उतना है, सरफेस में उतना है, एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर वो पोटेंशियल उतना ही होता है, कांस्टेंट. ओके. Yes, sir. ओके. नहीं वो क्लियर हो रहा है ना. दैट इज व्हाई Yes, sir. electrostatic potential and charge for a conductor and a dielectric, oh you should clearly, if it is not clear then I'll take a special class where again I will do it at all this electric potential and field in case of a conductor and a dielectric inside and outside. Next. Electric field at the surface of a charged conductor is proportional to the surface charge density. ये तो करेक्ट है. Yes, sir. क्योंकि surface, suppose you take electric field at the surface of a charged conductor is proportional to the surface charge density. देखो surface charge, let us take surface charge density sigma. Okay, so charge will be, suppose radius is r, 4 pi r square sigma is the q. Okay, this is clear. Then electric field at the point r at the surface. Surface electric field is 1/4 pi epsilon 0 q by r square. That is 1/4 pi epsilon 0 4 pi r square sigma by r square. So this will be sigma by epsilon 0. This is the electric field. Electric field at the surface is sigma by epsilon 0. Okay. Right. This expression you will be using anywhere, like suppose this is this has a charge on the surface is sigma. So what is the electric field near it? This electric field we always write sigma by epsilon 0. But if you take it, sigma is on this side, actually total is sigma, then you take two surfaces, then it becomes sigma by 2 epsilon 0. This is the expression you use it when, but here sigma by 2 epsilon 0 is the electric field near a charge conductor. Suppose a charge conductor is there. So there is total charge for unit area is sigma. Then by
you take a Gaussian surface and you find out E will be sigma by epsilon 0. You take a cylindrical surface and then find out it will be sigma by 2 epsilon 0. Here in this case, sigma by epsilon 0. In a conductor, actually this side there will be sigma and this side sigma, so 2 sigma. So here it will come E by sigma by epsilon 0. These things, when we will go to this capacitance and all those things, this will clearly come. But for this problem, this is clear now. For this problem, the electric field at the surface of a charged conductor is proportional to the surface charge density. So E is proportional to sigma. So this is correct. This statement is correct. Okay. Yes, sir. ये जो क्वेश्चन नंबर 55 इज फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स. ये कॉन्सेप्ट पूरा आप सबका क्लियर है या नहीं है? क्लियर नहीं है तो then all of you, if you will be present in one class, you will, or when you will be all free in one class, full electric potential and charge for dielectric, for a conductor, everything will just work out. Inside, outside, then hollow conductor, hollow dielectric, then solid conductor, solid dielectric, everything can be worked out. One full class. $55 है, हो गया? Yes, sir. Only thing is that whatever problem we are doing, again you try to do it. फिर भी कोई doubt रहेगा, then you ask me. Next question, 56. पढ़ो. Okay, sir, wait. हाँ. अब ना पढ़ो. So, पढ़ो कौन? बिना पढ़ो. the question is that if a charged spherical conductor of radius 10 centimeter. 10 centimeter has potential V at a point distance 5 centimeter from its center, then the potential at a point distance 15 centimeter from the center will be कितना? सर इसका 2/3 वोल्ट आएगा. अरे बढ़िया आंसर किया. कैसे किया? सर जो फॉर्मूला होता है हमारा V = KQ/R होता है. तो उसके अकॉर्डिंग और जो V पोटेंशियल इनसाइड और पोटेंशियल जो सरफेस पे होता है वो सेम होता है. तो उसके अकॉर्डिंग जब वो फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले तो V हमारा हो जाएगा KQ/10 एंड जो दूसरा V होगा हमारा KQ/15 होगा. फिर दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे तो 2/3 वोल्ट आएगा. वेरी गुड. पवन क्लियर? यस सर क्लियर है. हाँ. और सबको समझ में आया है और इसको करना है. सर यहाँ पे मैंने चार्ज की वैल्यू पहले निकाली, उसके बाद उसमें पुट कर दी, तो वैसे हो सकता है सर? हाँ. कितना आया तुम्हारा आंसर? सर सेम आंसर आया मेरा भी. हाँ. क्या पुट किया, क्या कैसे किया? सर पहले हमारा V तो हमारा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे मैंने उसका फॉर्मूला लगाया K × Q/R. तो वहां से हमारा Q का वैल्यू मैंने सर Q का वैल्यू पुट किया, वहां पे निकाला वहां से. So V is basically Q/10. यस सर. जो V डैश है ये this is Q/15. यस सर. So V dash is equal to 2/3 V. यस सर. तो वही Yeah, Sabna was telling same thing he told, same thing you are also telling, that is correct. ठीक है. ओके. चलो next.
Okay, sir. The question is that the kinetic energy of an electron which is accelerated in the potential difference of 100 volt is कौन सा करेक्ट है? सर 2 मिनट ऑप्शन सर ए सर सर ए हाँ हाँ ये करेक्ट. ये क्या है ना, कितना काइनेटिक एनर्जी इज क्यू भी, क्यू इंटू भी. क्यू इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू 100 जूल. ओके, क्यू भी, क्यू in coulomb and V in volt will give you volt. joule, or if you take in electron volt then it will come 100 electron volt. Okay, this is one electron going through 100 volt, so its potential energy, its kinetic energy will be 100 electron volt. Okay, and 1 electron volt is equal to 1.6 10 to the power minus 19 joule. और ऐसे भी आप करो 1. ये चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और वोल्ट इज 100, मल्टीप्लाई कर दो, कूलम इंटू वोल्ट इज जूल. सो यू कैन टेक इट आउट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कूलम वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कूलम वोल्ट इज जूल, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10 टू द पावर 19 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. Clear? Yes, sir. So next question. Yes, sir. The question is that figure shows 3 spherical and Figure shows 3 spherical and equipotential surfaces A, B, C round a point charge Q. The potential difference VA minus VB is equal to VB minus VC. If T1 and T2 be the distance between them, T1 is between VA VB and T2 is VB VC, then which relation is correct? कैसे करोगे? सर ये वाला आप बता दीजिए. क्या पवन हो रहा है? सर फॉर्मूला तो मे बी ये वाला यूज हो, जो हम एक ही सेंटर से जब सर्कल्स बनते हैं तो उसमें हम जो पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये होता है KQ इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 समथिंग. तो वो फॉर्मूला शायद यूज करके करेंगे. तो सर अगर वो यूज करेंगे तो बट उससे फिर हमें कैसे लाइक टाइम वहाँ पे तो T गिवन है तो उसका रिलेशन कैसे आएगा वो समझ बता दो आप. तुम्हारा ब्रेन तेज काम कर रहा है बट रास्ते में रुक जा रहा है. ओके, ब्रेन तो बहुत तेज से काम कर रहा है बट रास्ते में फिर रुक जा रहा है. रुकना नहीं, आगे चलना है. ओके, क्या पवन हो रहा है? सर अगर ऐसे करें पहले जो सर्कल A और B है पहले VA माइनस VB फाइंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग. तो अगर वो देखें. ओके, मैं कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ. Okay. पवन, क्या पवन है क्या? यस सर कर रहा हूँ 2 मिनट. What you are telling same as what she is telling, Sabna, whatever Sabna is telling, you are Yes. telling the same thing or something different? सेम. सेम. ओके, ये सेम करेक्ट है. वही देखो क्या है ना, चार्ज Q है, A, this is A, this is B, A, B, C, this is C. He is giving VA minus VB is equal to VA minus VB is giving
KQ VA minus VB, VA is equals to VB minus VC दिया. KQ is equal to VB minus VC. ये दिया Yes ना? sir. Yes sir. VB minus VC. Okay. So what you are telling, same thing, 1 by 4 pi epsilon 0 Q ले लिया, 1 by RA minus 1 by RB is equal to Q by 4 pi epsilon 0 1 by RB minus 1 by RC. ये दिया ना? Okay. Then 1 by RA plus 1 by RC is equal to 2 by. No, what he is asking basically, he has given this is RA T1 T2 क्या है? R1 minus RA minus RB. RB minus RA is T1. Okay. This is he is giving T1. This is T2. So telling which is bigger. Now from this you see RA into RB. RB minus R1. RB minus R1 is T1. Okay. This is similarly T2 by RB into RC. Okay. So T1 by RA is equal to T2 by RB. Which is bigger? RB is bigger. Okay. So T2 is bigger than T1. T2 is bigger than T1. This is equal to this. Since RB तो इसका आंसर T1 less than T2 होगा. इसका आंसर less than T2 होगा. नहीं देखो आंसर क्या होगा ना, ये जो RA which is bigger, RB is bigger. RB is bigger, RB is bigger, RA is smaller. T1 by RA, T2 by RB. So T2 should be bigger because ये बड़ा है. So this has to be bigger so that it will be equal. ये देखो T1 is equal to RA by RB into T2. Okay. So this is which is bigger? This is a smaller quantity. This is a smaller RA by RB is a fraction less than 1. Less than 1. So T2 should be greater than T1. क्या आंसर दिया? T आंसर क्या दिया? 55. ऑप्शन सी ठीक होगा. T1 is less than T2. तो वही बात होगी ना, like T2 is greater than T1. So T1 is less than T2. Yes sir. तो सी ये जो आंसर इसमें दिया है वो तो भूल दिया है. ओके. आंसर दिया क्या? T1 is greater than T2. सर ऑप्शन और आपका आंसर सेम तो है, सेम ही तो है. क्या सेम? सर ऑप्शन सी ही तो है इसका आंसर. आपने भी तो वही निकाला है. आंसर ऑप्शन T1 is less than T2, करेक्ट. तो आंसर दिया वो इसी दिया क्या? आपके पास आंसर है? मेरे पास यहाँ जो आंसर दिया 58 is C. हाँ सी दिया आंसर करेक्ट. सर आपने जो निकाला है ना उसका भी मीनिंग सेम ही हुआ और जो ऑप्शन सी है वो भी ठीक ही है. लाइक यहाँ पे जो आपने निकाला है आपने रिवर्स कर दिया बस. T2 is greater than ऑप्शन सी T2 is less than T2. ऑप्शन सी राइट होगा. Once you tell T2 is greater than T1, उसका मतलब T1 is less than T2 का था. बट कैसे हो रहा है तो तुम प्रॉब्लम कैसे अटेम्प्ट करना वो ठीक से बताया, बट वो कैसे करना है फाइनली ऐसे ही करना है. RB माइनस RA इज T1, RC माइनस RA, ये ऐसे कर दे. ये लास्ट पोर्शन समझ में आया ना?
हो गया Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. Clear है. नेक्स्ट को जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. पढ़ूं? पढ़ो. The question is that the electric potential on the hollow sphere of radius 1 meter is 1000 volt. The potential at 1/4 meter from the center of sphere is. सर पोटेंशियल तो हाँ सर पोटेंशियल तो सेम ही होगा ना पूरे सरफेस तो फिर तो Yes, sir. 1000 Constant वोल्ट ही है, होगा. क्योंकि उसका विद्युत परिमाण है. हो गया. कौन सा आंसर? ऑप्शन ए. A होगा 1000 वोल्ट. तो ये इसमें क्या क्योंकि क्वेश्चन था? इतना टाइम क्यों लगा? ये क्या है वो? तो एनीवेयर इनसाइड ये हॉलो कंडक्टर नहीं दिया. कंडक्टर नहीं दिया, हॉलो स्फीयर दे दिया. वो कंडक्टर करो जो भी करो, हॉलो है ना. तो इनसाइड देयर इज नो Yes, sir. चार्ज. So even if a dielectric there, it is a hollow dielectric. तो अंदर तो चार्ज कुछ नहीं है. So whatever will be the potential on the surface will be same everywhere inside the hollow sphere. Surface में जो है anywhere 1.4 मीटर में वही होगा, 1/2 मीटर में वही होगा. चलो नेक्स्ट. So next का तो ऑप्शन नहीं दिया है. क्वेश्चन ही नहीं आगे. नेक्स्ट का पढ़ो. Okay, sir. The question is that a square surface of side L meter in the plane of the paper is placed in a uniform electric field E volt per meter acting along the same place at an angle theta with the horizontal side of the square as shown in figure. The electric flux linked to the surface in unit of voltmeter is. कौन सा आंसर होगा करेक्ट? सर इसके ऑप्शन ही नहीं दिए. ऑप्शन नहीं दिए इसके. ओ अच्छा, ऑप्शन वो पेज में नहीं है. ऑप्शन दिया है, सर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन. ऑप्शन इसका दिया है E L². L is the side, each side L. This and making an angle theta. So B is EL² cos theta. C is EL² sin theta, and D is 0.
सर इसमें जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा बनेगा ना? 90 माइनस थीटा हाँ, बिटवीन नॉर्मल एंड फील्ड लाइन के। देखो ये प्लेन है, ये सर नहीं सुनो, प्लेन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द सेम प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द सेम प्लेन, ओके, and this is making an angle theta, this is theta. So what is the flux? सर मैं ये पूछ रही हूँ इनके बीच में, इसके बीच में जो एंगल बनेगा हमारा जो थीटा है, लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो E cos थीटा होता है, तो यहाँ पर जो थीटा है वो 90 माइनस थीटा होगा ना, बिटवीन नॉर्मल एंड फील्ड लाइंस के जो जा रही है। normal and फील्ड लाइंस के। what is the angle here, which is normal? सर नॉर्मल प्लेन तो हमें वो करना होगा ना। तो नॉर्मल कौन सा, क्या नॉर्मल? सर एरिया, इसका एरिया तो वो तो बाहर की तरफ होगा ना, बाहर से अंदर की तरफ। Yes, अगर ये area will be area of a surface. You can tell it this side. If you take the yes sir, outward की these तरफ। lines are like this, E, and this area you take this side is like this. That means E is like this. Then area is inside. And if you take this into this, then this will be into the paper. Here it will be, yeah, if it will be this way, then it will be outside the paper. The area will be actually perpendicular to the surface. Direction of the area. Suppose I will tell OA, this is OA vector, OA, this is OB. So area is OA cross OB. This is the area vector. So OA cross OB. OB means ये मतलब ये है OB area into this is here like this. OA cross OB, then this vector will be, yeah, into the paper. This will be into the area, will be into the area, indication will be into the paper. Area is actually OA into OB sin theta. Here theta is 90 into unit vector. Unit vector is either perpendicular into the paper or out of the paper, into the blackboard or out of the blackboard, depending upon these two lines. So what will be the flux? Flux is equal to E cos theta. magnetic field or electric field. Here electric field. Yes sir. Electric field into area. Area. E dot A. So what is the direction of A and A? क्या होगा angle between E and A? What will be the angle? Sir 90 minus theta. ये हुआ A E ये cos theta. Cos और थीटा जो होगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना। थीटा कितना है? 90 minus theta. 90 ये है. This is direction of the electric field is in this plane. This is perpendicular. Okay. You any plane you take, if suppose you first fundamental thing you remember, the flux, if it is the electric line of force is in this direction, if it is in this plane, then E dot this theta is, this flux will be 0. Flux will come, there will be flux when there is, suppose this is a plane of paper, this is a plane of the paper. If the electric field will be along this or this or this different directions, this is the field, this is the area. Now if the electric field is in this direction, then there will be a flux. In this direction flux. But if it is along the paper, in this whatever way it is there, then the flux will be 0, because this is electric field and the direction of the area direction will be always perpendicular.
So here, this is the area is along this perpendicular to the plane, and this electric field is in this plane. This is electric field is in the direction of the board, in the plane of the board. It's a blackboard hai. Ye electric field is in the same, in the direction of the, in the plane of the blackboard. Electric field is in the plane of the blackboard, and the area vector is perpendicular to the blackboard. So the angle between the electric field and the area is 90 degree. So the flux will be EA 9 cos 90 is 0. There will be no flux passing through it. हो गया? Yes, sir. देखो समझ लो कि देखो तुम डोर है, ये घर का दरवाजा है, तुम घर का दरवाजा से पैरेलल जाओगे तो घर का अंदर कैसे आ पाओगे? If you make an angle, if you come 90 degree to the door, then you enter the house. Or if you make even 60 degree, you enter the house. Even if you make 80 degree also, you enter the house. There is a chance of entering the house. But if you make 90 degree and parallel to the door, can you enter into the house? No, sir. समझ में आया ना? तो फ्लक्स कैसे होता है? यहाँ पे स्क्वायर के वो पास नहीं हो रहा उसके अंदर से, वो उसके साइड से चला जा रहा है. करेक्ट. तो देखो, तो जस्ट वेरी गुड एग्जांपल इज घर का अंदर तुम आओगे, कैसे आओगे? इफ यू गो पैरेलल टू द वॉल, पैरेलल टू द डोर, देन घर का अंदर नहीं आओगे, तुम निकल जाओगे ऐसे. तो हियर दिस लाइंस ऑफ फोर्स आर गोइंग, they are in the same plane as this square, whatever that square. So the lines of force are in the plane of the square. So there will be nothing entering into the through the square. There is nothing passing through the square. Okay. कुछ समझ में आ रहा है? Yes sir, आ गया समझ में. और आपका जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, क्या सर एक बात, जो आपने डायग्राम बनाया है वो अलग है और जो क्वेश्चन में दिया है वो तो अलग है. वहाँ पे जो एंगल है वो तो बिल्कुल ही अलग स्पेयर के बाहर बना हुआ है. क्या हुआ? क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन में वही दिया. क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन में तो वही दिया. तो जो एंगल, कौन सा एंगल है, इट डजंट मैटर. आप जो थीटा दिया, जो थीटा, ये थीटा है और ये थीटा है, उसमें से क्या फर्क पड़ता है तुमको? ये थीटा है और ये थीटा है, उसमें ये थीटा है. आई हैव रिटन हियर थीटा, यू आर टेलिंग ये दिया है कि ये थीटा है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? तुमको चाहिए ये क्या एंगल है, ये जो इलेक्ट्रिक, ये जो एरिया एंड इसका बीच में क्या एंगल है? इसका बीच में एंगल ये 90. तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज आई सेम प्लेन में, सपोज आई चेंज द डायरेक्शन लाइक दिस or I make the direction like this, do you think flux will be there? There will be no flux. So ये जो ये है plane of, ये plane of the blackboard. If the electric field is in the plane of the blackboard, then no flux is entering into the area, this area. So this direction is like this, or this direction is like this, or this direction is like this, doesn't matter. Okay. So this angle theta or this angle theta, these are of no use. समझ में आया? Yes sir. What is important is this angle. area का जो area vector है, जो area है, area vector is along this direction or into the paper or outside the paper. ये जो area, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल करता है? So for a area like this, the electric field has to be the electric field need not be along this, ये जो area के in the same plane. If electric field is in the same plane, there is no flux. So electric field has to be somewhere, the line of electric field has to be away from the plane of the paper.
plane of the board. समझ में आया ना? ये जो this is the area and this is the electric field. If the electric field is in this plane, whatever angle you make in this plane, so there will be no flux. But if it will be either perpendicular or making some angle in a different plane, then only there will be magnetic flux or electric flux. Isko, if you make a diagram like this, okay, this is X, Y, Z. Suppose the area is in the XY plane. Okay. If the electric field is in the XY plane, there will be no flux. So the electric field has to have some Z component. It has to be, if it is along the Z, if it is along the Z means perpendicular to this, all electric field will directly go, theta will be 90 degree. Theta will be 0 degree. Theta will be 0. So all these cos theta will be 1. It has to be some component of Z axis so that electric field will pass through this plane. If the electric field is in the XY plane, then there will be no flux. Oh yeah. Then you go to question number 78, 76. Okay, sir. So the energy stored in a condenser of capacity C, which has been raised to a potential V, is given by. सर इसका तो B हो जाएगा ना? 1/2 CV square. कौन सा? सर एक बार क्वेश्चन बता दीजिए कौन सा है? 76. The energy Yes, sir. stored. 2 मिनट भी. The energy stored in a condenser of capacity C. सर B होगा ना 1/2 CV square. ये Yes, sir. होगा क्या? ये CV तो square. ये इससे और सिंपल क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है. Yes sir. मैंने डाउट किया क्या है? सर मैं वही तो बोल रही थी लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं रहे. नहीं. ये हाफ CV स्क्वायर. ये क्वेश्चन ये इतना सिंपल क्वेश्चन कहाँ आएगा? वो उत्तर प्रदेश में आया था. अच्छा चलो. नंबर 77. पढ़ो 77. No. The question is that यार कहाँ से गया? ये रहा. Capacity of a capacitor is 48 microfarad when it is charged from 0.1 coulomb to 0.5. Change in the energy stored is. हो जाएगा. सर 2 मिनट दिमाग में. सर हो जाएगा. हो जाएगा ना? सर वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, क्या कहते हैं, U इज इक्वल टू 1/2
क्यू स्क्वायर बाय सी। यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर लेंगे वो चार्ज जो हमें यहाँ पे गिवन है लाइक Q1 स्क्वायर माइनस QT स्क्वायर लेंगे। तो उसे सॉल्व करने के बाद आएगा। वो पहला जो था 0.1 चार्ज था वो 0.5 हो गया, तो फाइनल एनर्जी इज हाफ Q स्क्वायर बाई सी माइनस हाफ Q स्क्वायर बाई सी। सो 0.5 स्क्वायर बाई हाफ 0.5 स्क्वायर बाई सी माइनस हाफ 0.1 स्क्वायर बाई सी। इसे कर दोगे हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। Q स्क्वायर बाई सी हो जाएगा ना, करना है इसको, वो तो कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन। और कौन कौन है आपके पास साथ? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। आसमा, यस सर, बी होगा। आसमा एंड मनीषा, आसमा एंड मनीषा, आर यू एबल टू? यस सर। हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? जी सर। यस सर, आ रहा है। ओके ठीक है, वेरी गुड। सो उसको आप ऐसे करो तो सी दिया है क्या 48 माइक्रोफैराड, हाफ 0.5 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर बाई सी कितना दिया है 48 माइक्रोफैराड। हाँ, कैलकुलेट कर दो। ओके 1/2 इंटू 1/48 0.25 minus 0.01 यस सर, into 10 to the power minus 6। ओके ये 96 है, ये हो गया 0.04 10 to the power minus 6। सर -6 ऊपर जाके प्लस नहीं हो जाएगा? ओ प्लस, वेरी गुड। हाँ ये प्लस रहेगा, तो ये हो गया क्या 24/96 इंटू 10 to the power 4 1/4 1/4 100 ले लिया तो 25 इंटू 10 to the power 2 और 2.55 तो 10 to the power 3। क्या दिया आंसर? दिया कुछ 2.5 10 to the power minus 3 दिया है। यस सर। हाँ कौन सा, विच अल्टरनेटिव? आंसर कौन सा आया? नहीं कौन सा आंसर है, कौन सा ऑप्शन? हाँ सर ये अप्रोक्सीमेटली होगा ना इसका, टू नहीं वो ये 77 का कौन सा अल्टरनेटिव आया आंसर? अच्छा ये हो गया 77, नेक्स्ट विल गो टू 78। सर बी, मेरा भी आ रहा है। यस सर, 77 का आंसर बी हुआ ना? यस सर। सर यहाँ पे बी में तो 10 की पावर -3 है, तो यहाँ पे कैसे आएगी -3? -3 हुआ, ये तो +3 होना चाहिए। नहीं क्या होना चाहिए, ये तो हुआ 10 to the power 4 1/4, तो हमको 10/4 इंटू 10 to the power 3 हो गया। ओके सो 2.5 इंटू 10 to the power 3 हो गया। बट वो एक मिनट रुको, माइक्रोफैराड एंड
It is charged from 0.1 coulomb to 0.5 coulomb. तो प्लस होना चाहिए, प्लस प्लस 2.5 प्लस 3. मैं देखता हूँ आंसर क्या दिया है. हाँ, ये जो ए का देखो आंसर ए क्या है. कितना निकला है? ये है, ये कितना है? ये 2.5 यस सर, ये अभी सही है. तो व्हिच अल्टरनेटिव इज करेक्ट? आंसर कौन सा आया? ए बी सी डी कौन सा? सर ए. आंसर इज ए. Yes, sir. A. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आप लोग कर रहे हैं तो कर दीजिए, एक एक मिनट लेके इसको कर लीजिए, इसके बाद विल गो टू. करेंगे आगे. Yes, sir. पढ़ रहा हूँ. Next question. पढ़ो पढ़ो. Sir, 78 na. हम्म The plates in a parallel plate capacitor are separated by a distance d with air as the medium between the plates. In order to increase the capacity by 66%, a dielectric slab of dielectric constant 5 is introduced between the plates. What is the thickness of the dielectric slab? What is the thickness of the dielectric slab? Yes. करेंगे इसको. This is a parallel plate capacitor. The distance between these is TD. Capacity is C. Okay. He is telling that I am putting a dielectric material in between this. I am putting a dielectric material of thickness T. इसको T निकालने के लिए बता रहा है. Capacity is becoming 66% more. That means C plus 2C by 3, 66. है ना? So this becomes 5C by 3. कैपेसिटर हो, कैपेसिटी हो गया 5C by 3. इसका कैपेसिटी था C. ये डाइलेक्ट्रिक लगा दिया. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 5.
So ये कैपेसिटी हो गया 5C/3. So what is the thickness of this dielectric? होगा? हो जाएगा? अच्छा देखो, here capacity is A by D by epsilon 0. Here the capacity is 5C/3 is equal to A D minus T epsilon 0 plus 5 epsilon 0 into T. Sorry, D by epsilon 0. This is, what I have written D by epsilon 0. Here D minus T is air. D minus T air. Plus T is 5 epsilon K. That is K. T is dielectric. T is dielectric. This is the A by D by epsilon 0. Here, once you put the dielectric, the air thickness becomes D minus T. D minus T epsilon 0. Dielectric portion is T. T by, in place of epsilon 0, I put 5 epsilon 0 because the dielectric constant is 5 here. Okay. This is the equation, but you have to solve it. Okay. So I can make it A into 5 epsilon 0 by 5 D minus T plus T. Okay. And this is A by A epsilon 0 by D. This, if I divide 1 by 2, I divide 1 by 2, I will get 5 by 3. This will be D 5 D minus T plus T by 5D. देखो थोड़ा epsilon 0 A by A, इसको इसका अंदर रखा तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया 5D, ये 5D minus T plus T. भूल हुआ? This is dividing by this, so ये 3 by 5 हो जाएगा. देखो यही सोच रहा हूँ कहाँ भूल हो गया. इसको इसमें डिवाइड करो, 1 को 2 में डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 3 by 5 हो जाएगा. C डिवाइडेड बाई 5C/3 मतलब 3 by 5 हो गया. ये A epsilon 0 कट हो गया, नीचे आ गया D epsilon 0, ऊपर चला गया 5D minus T plus T. देखो यहाँ तक ठीक है तो आगे बढ़ेंगे. हो गया? यस सर. ये समझ में आया ना, C इसका कैपेसिटी यस सर. A by D by epsilon 0. Why I should write like this capacity, but I did it like this to take care of the dielectric. D by epsilon 0 में रख दिया, क्योंकि देखो जो एयर ये जो एयर का थिकनेस हो गया, ये जो डाइलेक्ट्रिक लगा दिया T, एयर का थिकनेस हो गया D minus T. So D minus T epsilon 0 और
कैपेसिटर का ये जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस टी बाई इसका जो डाइलेक्ट्रिक इज 5 एप्सिलॉन 0, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन 0। तो उसको सॉल्व कर दिया, इसे कर दिया, तो इसको इसमें डिवाइड करने से ये आ गया, तो इसको काट दिया। सो देन यू विल गेट हियर 3d is equal to 5d minus 4t. So 4t, here I'll write 4t is equal to 2d. So t is equal to d by 2. भैया हो गया? यस सर। समझ में आया ना? Yes, sir. यस सर। यू शुड बी क्लियर। सो इस टाइप का जो प्रॉब्लम आएगा तो आप कैसे जो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर का अंदर हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, तो जो एप्सिलॉन को नीचे क्यों लाया समझ में आया? तो ये डिस्टेंस के साथ रिलेटेड कर दिया, d इज रिलेटेड टू दिस डिस्टेंस एप्सिलॉन 0। सो d को d बाई एप्सिलॉन 0 करके इसको जब डाइलेक्ट्रिक रखा तो इसको जितना एयर है, एयर रह गया d माइनस टी इज द एयर, सो d माइनस टी बाई एप्सिलॉन 0, और t इज डाइलेक्ट्रिक, तो प्लस t बाई 5 एप्सिलॉन 0 बिकॉज 5 इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो उसको इसी में वो जो 5c/3 जो ये लिखा ना, इसको आपको पूरा क्लियर आइडिया हो गया। तो इसी टाइप का प्रॉब्लम जहां भी आएगा इसे यू ट्राई टू सॉल्व लाइक दिस। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? No, sir. हो जाएगा क्लियर। देखो बेसिक आइडिया इज हाउ व्हाई आई रोट c इज इक्वल टू a, आई विल राइट कैपेसिटी इज a एप्सिलॉन 0 a by d, ये है ना एप्सिलॉन 0 a by d। तो मैं क्यों लिखा a by d डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0? बिकॉज my d is get d and epsilon 0, they are getting separated by another dielectric। तो d पूरा एप्सिलॉन 0 नहीं रहा, पूरा d नहीं रहा, कितना रहा एप्सिलॉन 0 में, एयर में, दैट इज d माइनस टी। सो d माइनस टी बाई एप्सिलॉन 0, जो दूसरा जो सेकंड स्टेज में ये दिस यू शुड क्लियरली अंडरस्टैंड, सो दैट फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम आएगा टू सॉल्व इट, दिस इज एक्चुअली आई विल राइट लाइक दिस, बट इसमें नहीं होता है। तो व्हाट आई विल डू इज c इज a d बाई एप्सिलॉन 0, ये है जो चेंज हो गया, जो डाइलेक्ट्रिक आ गया, इसलिए इसको इसे रख दिया। तो एयर में नेक्स्ट जब हो गया कैपेसिटी, ये डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद ये कैपेसिटी a बाई जो d बाई एप्सिलॉन 0 गेट्स चेंज टू एयर में कितना है, d माइनस टी इज इन एयर, ये t है, तो d माइनस टी इज इन एयर, सो d माइनस टी बाई एप्सिलॉन 0 इन दिस फॉर्म, ये इन दिस फॉर्म है। और ये जो t है, ये जो एप्सिलॉन 0 बिकम्स 5 एप्सिलॉन 0 फॉर दिस t, ये फॉर्म में इसको लाके दोनों को ऐड कर दिया। ओके, देन आफ्टर दैट रेस्ट यू कैन सॉल्व इट, दैट इज प्योर अलजेब्रा,
तो और एक दो छोटा सा है, इसको करके खत्म करेंगे आज। यस हाँ सर। बोलो 79। सर अभी बताता हूँ। व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टैंक? सर इसका कैपेसिटर होगा। हाँ कैपेसिटर में एनर्जी कैपेसिटर का बोलते हैं एनर्जी ना, क्या स्टोर्ड होता हाउ है। मच ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q स्क्वायर बाई C। सो कैपेसिटर इज ए स्टोरेज ऑफ एनर्जी, रेजिस्टर इज ए डिस्ट्रॉयर ऑफ एनर्जी। इसको डिस्ट्रॉयर तो नहीं है, वो हीट बना देता है, जो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी आता है इसको हीट बना देता है। सो ये स्टोर करता नहीं। इंडक्टर, इंडक्टर भी वैसे ही है, लाइक रजिस्टर। सो एंड मोटर इज समथिंग डिफरेंट concept to the mechanical to electrical energy, electrical to mechanical energy, but they don't store energy. Okay. ये जो क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ो। पढ़ रहा हूँ सर। In a parallel plate capacitor, the separation between the plates is 3 millimeter with the air between them. Now a 1 millimeter thick layer of a material of dielectric constant 2 is introduced between the plates, due to which the capacity increases. In order to bring the capacity, its capacity of the original value, the separation between the plates must be made. कितना, how much should be the separation between them? ये जो 78 जो प्रॉब्लम किया है एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉब्लम। यस सर। देखो 70 को देखो, 78 को देखो, ये सेम थिंग। वहाँ कैपेसिटी इंक्रीज रहा था, सेपरेशन वाज सेम, कैपेसिटी इंक्रीज। हियर टू रिड्यूस द कैपेसिटी यू रिड्यूस द, ये जो सेपरेशन को कम कर रहा है। कैपेसिटी सेम C, वहाँ ऊपर C रहेगा, इधर C रहेगा, और वहाँ D था, हियर इट विल बी समथिंग डिफरेंट। सो वहाँ D 3 मिलीमीटर रहेगा, ये X ले लो, यहाँ सेपरेशन X ले लो। X में 1 will be 1 millimeter is dielectric, the other X minus 1 is the air। तो उसको सेम ये वे में प्रॉब्लम करके निकालो X, what should be the separation between the plates? Separation between, now the question is asking what is the separation between the plates? प्लेट्स का अंदर का सेपरेशन क्या है, इसको ले लो X। तो X is the separation between the plates, उसमें 1 मिलीमीटर डाइलेक्ट्रिक है। तो ये क्या हो जाएगा, D बाई X माइनस T बाई एप्सिलॉन 0 और X माइनस 1 बाई एप्सिलॉन 0 प्लस 1 बाई whatever 5 एप्सिलॉन और 3 एप्सिलॉन 0 जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया करके निकाल दोगे। सो वो ये प्रॉब्लम आप लोग कीजिए। 78 जैसे हुआ एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम, सेम मेथड अप्लाई करके यू डू इट। है हो जाएगा ना? यस सर। What will be the answer? Guess and tell me. चलो इसको करो आप। आई थिंक आंसर शुड बी आइदर A और B, मोस्ट लाइकली A। हो जाएगा ना? दिस B विल बी द आंसर, आई थिंक B विल बी द आंसर, बिकॉज ये 2 है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 2। इसको तो ये एक रहे थिकनेस, एयर का थिकनेस
विल बी 1.5 और इसका थिकनेस है 1 रहेगा 2.5 में. दिस विल बी एयर थिक, दिस इज 1 मिलीमीटर, तो एयर विल बी 1.5. 1 मीटर का 2 हो जाए 1, इस 1.5 1 ये पॉइंट हो जाएगा. ये प्रॉब्लम कर रहे हो क्या अभी? ये सर कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए. हाँ करो 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 करो. नो हरी नो हरी, आप लोग करो. सर बता दीजिए. ये है 3 mm. Okay, I'll take capacities
here D is actually so answer is coming 3.5. देखो तो पहले कैपेसिटी क्या था A by D by epsilon 0. D is 3 mm, ये 3 mm था. Now he is telling इसका अंदर एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया 1 mm का 1 mm का लगा दिया. So what will be the distance between these two so that capacity will be same. अच्छा अब जब ये जो क्या होता है ना जब ये डाइलेक्ट्रिक लगा दिया इसका कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा. डाइलेक्ट्रिक लगाने से कैपेसिटी बढ़ जाएगा क्योंकि कैपेसिटी एप्सिलॉन 0 के एप्सिलॉन 0 A by D. तो अब के लगा दिया इसको बढ़ा दिया एप्सिलॉन को बढ़ा दिया तो कैपेसिटी बढ़ गया. तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो D को बढ़ा देना चाहिए. यू हैव टू सेपरेट इट. इसको बढ़ाने से कैपेसिटी सेम रहेगा. समझ में आया? आपको पहले डाइलेक्ट्रिक लगा दिया डाइलेक्ट्रिक लगाने से कैपेसिटी बढ़ गया तो कैपेसिटी को सेम करने के लिए क्या करेंगे अब D सेपरेशन बढ़ा देना. तो ये पहले 3 mm था तो इसमें कैपेसिटी इज A by D is 3 by epsilon 0. Now same capacity but the separation is now X. Here it is X. Separation is X. A by X में 1 millimeter is with dielectric that is 2 epsilon 0 and X minus 1 is AR. Okay. ये 1 को ये फर्स्ट का ये सेकंड का इक्वेशन दोनों को देखो कंपेयर कर दिया 3 by epsilon 0 will be x minus 1 by epsilon 0 by 1 by 2 epsilon 0. So 3 is x minus 1 plus half. So x is equal to कितना होगा x minus 1 plus half that is minus half. Minus half इधर आ गया तो x is 3.5. यस सर डन. हुआ ना क्लियर? जी सर. दोनों प्रॉब्लम सेम. आप इसको जो किए उसको छोड़ के अब फिर कल एक बार अपने आप ये 2 क्वेश्चन को कर लीजिए अपने आप. वो आंसर को ये आप डोंट लुक बैक जो आप लिख रहे हो अभी उसको भूल जाओ. कल फिर एक बार अपने आप ये 2 प्रॉब्लम कर लो. ओके आइडिया पूरा क्लियर हो गया ना? Yes, Pawan, sir. हो गया? Yes, sir. ओके तो वी हैव कम अप टू 80. तो we यही बंद करेंगे. Yes, sir. तो कल ये पेज में है 81 to 89. इसके बाद 104 से 119 तक देख लीजिए. 81 to 89 these are 9 questions 10 questions. इसके बाद 104 से 119 तक देख लीजिए so that we can try see tomorrow. Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Okay, bye. Okay, थैंक यू right, सर. right. Thank you. Bye. बाय सर.